मैं यहाँ पे म्यूट पे बोले जा रहा हूँ ऐसा तो है मेरा दिमाग सो हेलो एवरीवन वेलकम टू अनदर स्ट्रीम थोड़ा और समय हमारे साथ वेस्ट कीजिए अपने दिन का ऑलरेडी आप कितने घंटे वेस्ट कर चुके हैं काफ़ी कर चुके हैं थोड़े और कर लेते हैं चलो वेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि we'll be talking about the political trash which is which is making fun of the only cause that we all are standing and fighting for. And I thought that this would be one of the correct times or one of the appropriate times to address this because of the fact that बरसाती मेंढक थोड़े ज़्यादा ही बरसाती हो रहे हैं आजकल एक बार नहीं दो बार नहीं आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली महाराज ने सो सलाम 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 शेख भाई आप सबको सलाम करती नेहा तो सबसे पहले आज हम एड्रेस करेंगे सबसे पहले नहीं आज हम इन्हीं को एड्रेस करेंगे उससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं करेंगे won't keep it a long session would keep it very crisp and short but we need to understand are we blind enough to see what's happening or are we just pretending to be that naive that ठीक है यार सुशांत का नाम ही तो यूज कर रहे हैं एटलीस्ट सुशांत का नाम नेशनल मीडिया में तो आ रहा है आई गेट इट आ रहा है सो आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस Rita is asking, looking forward to the protest tomorrow. Same here. I'm very much excited, very charged up. I'm just can't wait to get on the ground. और दिल्ली है यार बात ही अलग है दिल्ली की नहीं and yes I'm still in Mumbai and I will be in Mumbai for a longer period of time apart from the next 2 days okay moving further जैसा कि हमने 2 दिन पहले ही वी डिस्कस्ड कि ये बरसाती मेंढक है और ये आएंगे ज़रूर और जब ये आएंगे तब all we would be able to do is all hail King Frog because that is what is happening that is what is happening ठीक है क्योंकि मैं थक गया हूँ देख देख के 2 साइड्स क्रिएट हो गए हैं एक साइड है जो बोलता है कि वट एवर दीज पीपल दीज फ्रॉग्स आर डूइंग इज राइट कि एटलीस्ट नाम तो आ रहा है सोशल नेशनल मीडिया में और दूसरी तरफ एक साइड ये है जो बोलता है कि दिस इज नॉट राइट व्हाट रानीज आर डूइंग टुडे we would try to analyze a neutral side which has pros and the one which has cons. But the sad part is that when it comes down to the comparison, cons surpass pros in numbers with flying colors. So, Gloria, 5 cars. Yep, there were multiple cars as he mentioned. But again, first, let's understand what did he try to do now. Second, we'll try to understand how did Rane pop up in with this case. Third, we'll try to understand what all Rane has said since the past, since this particular case started. Fourth, we'll try to understand what this family is all about. We'll come to that at a later stage because it was a surprise for me. Many might know, many might not. So, as it was a surprise for me, it would be a surprise to a lot of people. As I think, I mean, not judging, but yeah. Neha Bhatia, the witness was fake, right? Yeah, Neha, no, I don't know. To be very frank, I don't know. Fake or true, that is something which the agency would come out with. There are a lot of witness accounts that has come further. Now, the one thing that we need to notice
is what also came out as a news, as a rumor. I don't know how true that is. That whatever Rane has, he has it because of Ganesh Shivarkar. So I don't know how much you guys would want to trust on or bank on that information, or uh, whether if you would think that whatever Rane claims to know, even if it's correct or not, we do not know. So there is a big quote unquote there, right? So just on the basis of assumption, we cannot allow someone to use सुशांत's name. ऐसे तो हम बहुत राइटियस बनते हैं ना कि यहाँ पे कोई यूट्यूबर अगर सुशांत का नाम यूज करके कुछ भी ऐसा करना चाह रहा है तो उसको आवाज उठाने के लिए हम सबसे पहले आगे आते हैं, इंक्लूडिंग मी. सो why are like why are we allowing people like such big politicians whose work, whose bread and butter runs from playing politics? It is as blunt as it can be. So why are we allowing such people to use Sushant's name? And if he is doing so, we should aggressively, like ask him that, dude, if you know this, then at the first you say that, I have given everything to CBI. And on the other hand, today, your version is like, if CBI comes to me and asks me, then only I'll give them. Who are you? Are you so important in this case that CBI would come up to you themselves and ask you that, oh, Rane sir, आपके पास कोई प्रूफ थे चप्पल चोरों के अगेंस्ट और उनके ये जो गैंग है, कबाल है, उनके अगेंस्ट, आप प्लीज हमें देंगे ताकि हम इन्वेस्टिगेट कर सकें? Isn't it your duty, Mr. Rane, that you should have, at least had a sense of responsibility, that if you have something, an ex-chief minister of Maharashtra, how stupid can you be? How stupid can you be? If you have something related to a murder, wouldn't you submit it already to the agencies? Or why would you end up saying in a press conference that, you know, जब सीबीआई मुझसे पूछेगी तब बताऊंगा? क्यों भाई? किस बात की अकड़ है? Just because you want to win the elections, just because you know that you have joined hands with, uh, BJP, and now you can, every time when it comes to attacking MVA or Shiv Sena, he uses Sushant since last 2 years. That's what he has done. Whenever he wanted to attack them, whenever he wanted, like to criticize anyone in Shiv Sena, all he did was use Disha Salan and Sushant. And we like mads and fools are getting happy out here कि यार, देखा, राणे जी ने बोल दिया, राणे जी भगवान हैं. पहले वो भी कांग्रेस का ही था. अभी देखेंगे भगवान की चल चरित्र, देखते हैं अभी आगे. आगे बढ़ते हैं. राणे राणे जी ने आज किया क्या? चलो, मैं वरुण ने आज एक ट्वीट करा है, एक छोटा सा क्लिप, मैं वो चलाना चाहूंगा पहले. आई जस्ट शेयर दैट. वरुण भाई, तुम्हारा ट्विटर डाल रहा हूँ, कॉपीराइट मत मार देना, ठीक है? जस्ट किडिंग, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, लेट मी शेयर दिस. देयर वी गो. ठीक है, ये रहे बंदे. पहले हम वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं और हम इसको प्ले करते हैं. किसका? सुशांत सिंह का बात कर रहे हैं. अरे मैं हादसा बोला, मराठी में कहा जब दिशा सालियन और सुशांत एक दूसरे को पहचानते थे, तो उसकी हत्या जब हुई तो कहा भी कमेंट्स करके सुशांत बोला कि जिन्होंने किया मैं छोड़ूंगा नहीं. वो मैसेज इन लोग के पास जा गया है जिन्होंने मर्डर किया है. कोई सेम नाइट रात को उनके घर पे 5-6 गाड़ी लेके आए. उसमें एक मंत्री का सिग्नल वाली गाड़ी थी ताफा में, बिल्डिंग के लोगों ने देखा है. और अंदर जाके सुशांत जब भी उनको बोला नहीं मैं छोड़ने वाला, तो उसको चारों तरफ से पकड़ के मारा है. वो सावन लड़का उधर था जो अब गायब है.
इस तरह से उनकी हत्या की गई। ठीक नहीं, ऐसा कैसा बोलूंगा? ठीक नहीं कैसा करेंगे? ऐसा क्लोज तो नहीं हुआ फाइल, ओपन है। अरे इनको क्या मालूम, कौन बोलते हैं, उनको क्या मालूम है? पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, उनका वर्किंग कैसा है? मर्डर केस कभी भी ओपन हो सकती है। हाँ? परिवार के लोग हैं। करीबी क्यों? एक करीबी है, रिलेटिव है, 3 घर के हैं। तुला तर अजिबात सांगणार नाही। मेरे पास मांगेंगे जब मैं दूंगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा सार कि हुआ क्या। हम्म? सबसे पहले ये करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इनकी ऑलरेडी कुछ भैसा भैसी चल रही है राउत के साथ, और whatever the shit is going on. Now he does a press conference wherein he discusses again about Disha Salyan and Sushant. He did mention there were 5 to 6 cars, with one of the cars having the मंत्री की रेड लाइट बत्ती वाली बिल्डिंग के लोगों ने देखा है. अगेन वन थिंग टू थिंक अपॉन और स्ट्रेस अपॉन, हाउ डज ही नो कि बिल्डिंग के लोगों ने देखा है. सेकंड, when he says that दीपेश सावंत was present there और वो गायब है, तो इसको मालूम है कि दीपेश सावंत was a part, an effective part. वही दीपेश सावंत जो प्रो टीम का भी पार्ट था कुशल जवेरी और 2-3 और लोगों के साथ. ये कुशल जवेरी घूम घूम के फिर आता है नहीं. दीपेश सावंत इज द वन जिसके पास से 22 लाख रुपए कैश और एक गन मिली थी when he was arrested. So that again raises questions, doesn't it? It does, right? So now, one thing that pops up, and also the fact that he mentioned in the end, एक समय था जब ये यही यही ऑल हेल किंग फ्रॉग मिस्टर राणे यूज्ड टू से हमने दे दिया है सब सीबीआई में, सब सीबीआई में दे दिया है हमने, बिल्कुल एकदम बिंदास दे दिया है, सीबीआई कर रही है सब चीजों पे काम. और अब कहता है सीबीआई जब मांगेगी तब देंगे. कौन हो भाई तुम? प्रधानमंत्री बन गए क्या ऑलरेडी? सीबीआई तुमसे मांगेगी तब तुम दोगे. सीबीआई को सपना आएगा रातों रात. एंड राणे नोज फ्रॉम वन ऑफ आवर वॉरियर्स, गणेश रिवारकर. दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड एज अ रूमर. अगर वो चीज है तो राणे इज नॉट क्रेडिबल फॉर मी एट ऑल. आई एम सॉरी. So earlier he had a different version, now he has a different version. And now if people say कि अरे यार कम से कम वो नेशनल मीडिया में सुशांत और दिशा का नाम तो ला रहा है, क्या हो रहा है नाम लाने से? क्या कर रही है रिपब्लिक? क्या कर रहा है स्टार न्यूज? क्या कर रहे हैं दूसरे चैनल्स? इंडिया टुडे वगैरह से तो कोई उम्मीद नहीं है, बट क्या कर रहा है नेशनल मीडिया? क्या कर रहा है टाइम्स नाउ? They have milked this campaign already, and you guys don't have an idea about it. They're not going to come back. They're not. I'm not trying to demotivate you. I'm just trying to show you the reality. RHEALITY वाला नहीं, नो असली वाला रियलिटी. बहुत ज़रूरी है कि हम जाने और हम समझें कि the time's gone that some of the known or bigger figure would stand with us. No, we are by ourselves. And the day you would get it in your mind, these detractors won't be a distraction anymore. तभी अभी जब राणे का नाम आ गया तो सब इतना हुजूम में लगे हैं. अरे राणे ने नाम ले लिया, अरे राणे ने नाम, ओ राणे जी थैंक यू सो मच, राणे जी थैंक यू सो मच.
Thank you, my foot. If you know something from a year and a half and you are playing with it and you're also saying कि सत्ता जब बदल जाएगी उसके बाद फिर ये सारा केस खुलेगा, क्यों भाई? पहले क्यों नहीं खुलेगा? और फिर उसके लिए एक रीजन दे दो कि अरे हाँ पॉलिटिक्स तो शिवसेना की है ना, तो क्या कर सकते हैं? क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट में खुदा नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं कर सकती? हम क्यों स्टेट गवर्नमेंट के पीछे बैठे रहेंगे? क्योंकि ये केस भी सेंट्रल के पास है तो स्टेट का इसमें काम क्या है? हम क्यों स्टेट बीजेपी को बड़ा बनाए? मैं कह रहा हूँ, नेताओं ऐसे लोग, ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। यूथ को नेताओं के लिए चुनो, वोट मत दो ऐसे लोगों को। नहीं चलेंगे, सेम चीज होगी। और अब भी दिखाता हूँ, चलो आओ, आओ डीप डाइव करें, जाने क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और क्या क्या किया। मैं रैंडमाइज्ड वे में आर्टिकल्स दिखाऊंगा एज यूजुअल। एंड में जाके वील सम इट ऑल अप। ठीक है, रैंडम आर्टिकल्स हैं कुछ, a few articles which would bring us up close and personal to the Rane family as we know it. ठीक है, अब मैं कोई ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ ना, neither do I prefer doing that. Whatever is like relevant, I'm just trying to go through them. तो सबसे पहले हम एक आर्टिकल देखेंगे। वेट, मतलब देर आर हाइट्स ऑफ like playing political advantage game, yaar. Literally heights of it. Heights of it. They are using Sushant's name just to gain that political agenda that they have to win the BMC elections. How can we let that happen? Okay, let me share this, okay? Just a moment. I'll hide myself. अब हर जगह ऐड दे दो यार, हर जगह इसके ऊपर भी दे दो, पढ़ने मत दो। गॉड, just a moment, yaar. Okay. Shiv Sena's power limited to Matoshri, BJP leader Narayan Rane. कब का आर्टिकल है ये? February 10, 2022। बोले तो 9 दिन पुराना। Union Minister Narayan Rane has questioned Shiv Sena's political might in Mumbai and said that its power is limited to Matoshri, the residence of party president and Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray in Bandra East. Rane's comments came in response to Shiv Sena MP Sanjay Raut's statement that his party is the most powerful in Mumbai. तो ये हमारे मामा जी और ये हमारे मेंढक जी के बीच में बहसा बहसी चालू हुई ट्विटर में। तो उसके बाद इन दोनों के बीच में वर्ड्स एक्सचेंज हुए। शिवसेना एमपी संजय राउत से शिवसेना इज मुंबई's दादा, but its power is limited to Matoshri, Rane said in a tweet in Marathi. Gone are the days when you could threaten somebody, now things have changed. Shiv Sena's Rajya Sabha member Sanjay Raut wrote a letter to Vice President M. Venkaiah Naidu, to Vice President, claiming he was approached by certain people who asked him to assist in toppling the MVA government in Maharashtra so that the state could be forced into midterm elections. Raut also tweeted a photo of a tiger, Shiv Sena's party symbol, and in a Hindi post along with it said, "Jhukenge nahi, Jai Maharashtra." अच्छा ये पुष्पा, अच्छा, ओ, ओके 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 ओके। तो हमारे राउत मामा यहाँ पे अल्लू अर्जुन बनना चाह रहे हैं ऐसा? चलो ठीक है, करेंगे, हम उनकी हेल्प करेंगे अल्लू अर्जुन बनने में। वो भी नाचेंगे। बट यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि इट्स द सेम ओल्ड थिंग कि सिस्टमैटिक अटैक हो रहा है एमवीए के ऊपर। और अगर अगर राणे की जो इंफॉर्मेशन है वो गलत है, अगर राणे की इंफॉर्मेशन गलत है तो संजय राउत इतना रैटल क्यों हो रहा है? ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया ना कि यार राणे को गाली दें या सपोर्ट करें, क्योंकि सामने वाला जो ऑपोजिशन पार्टी है वो रैटल हो रही है, ऐसा नहीं है कि रैटल नहीं हो रही है, रैटल हो रही है। मे बी
there is some hidden truth जो राणे भी नहीं जानता है, एंड दिस इज कॉल्ड प्लेइंग इन द डार्क. लाइक अंधेरे में तीर चलाना. राणे ने अंधेरे में तीर छोड़ दिया कि बेटा दिशा के इसमें कुछ ना कुछ उलझन है, इन्वेस्टिगेशन बैठेगी तो अपने आप स्लाइड इन होंगी चीजें. तो मे बी ही इज यूजिंग इट इन दैट वे. बट but he's using, again, quote unquote, using in caps, using Sushant Singh Rajput and Disha Salyan to fulfill his political motive. Let's go through a few articles which would explain what has been happening. Okay. We'll see what Sanjay Raut is up to. We'll see what Rane is up to, and we'll try to see कि इनका क्या शुरू से हमेशा ये पैटर्न रहा है, चूहे बिल्ली का, चूहे बिल्ली का. क्योंकि बहुत कुछ हिडन है भाई. ऑब्वियसली सुपर डॉटर, आई अंडरस्टैंड, यस यू आर एग्जैक्टली राइट. Bharat, one more point. Baby Penguin will not use his car with lights for murder. Exactly, Mubina. Who would? And I'm just trying to know that whether whosoever went, even if such a car went, did they go with an intent to murder, or did they go with an intent to meet and talk things out? That's a question to ask. Okay, so आगे बढ़ते. Agency wouldn't. Agency, Neha, wouldn't go by themselves and tell Ranes कि sir बताओ क्या है आपके पास. No, they wouldn't until and unless Rane voluntarily walks up. He's just using it to win the election. That's what we need to understand. We don't need to give him that importance. And let me show you this article. It says Narayan Rane threatens Thackeray government over Sushant Singh Rajput's former manager Disha Salyan's death case. यूनियन मिनिस्टर, ये कब का है ये भी देख लेते हैं. ये है 25 अगस्त 2021. तो ये सर ने बीच में ऐसे, जब बरसात का मौसम था, एक्चुअली मॉनसून अपने चरम पे था, तब अगस्त 25 को एक मेंढक आया और उस मेंढक ने बोला टर टर, और उन्होंने ये बोला 25 अगस्त को, he would ensure that the Disha Salyan death case reaches a logical conclusion. I won't stop unless the guilty are punished. I would only speak when there is a need of votes for elections and I need to fulfill my political agenda. And I will ensure that I will stoop to any level, no matter if I have to use the dead in order to fulfill the desires that I have. आई मीन ये तो थोड़ा मेरा था, बट हाँ. तो इन्होंने बोला आई वोंट स्टॉप अनलेस द गिल्टी आर पनिश्ड. The center of Maharashtra's new slapgate, Narayan Rane said, Disha Salyan used to be Bollywood actor Sushant Singh Rajput's manager. Just a week before Sushant Singh Rajput's death on June 14, 2020, Disha Salyan was found dead. Narayan Rane has been openly claiming that Disha was raped and murdered. The case has been closed as the autopsy report ruled out murder and any sexual assault and asserted that Disha Salyan committed suicide. Disha Salyan did not commit suicide. She was raped and murdered. We know what he said. One of the young ministers from the current Maharashtra government attended the party where Disha Salyan was also present. Maharashtra government trying to save the culprit, Narayan Rane has said in a press conference in August last year. Linking the unnatural deaths of Disha Salyan and Sushant Singh Rajput, the former chief minister of Maharashtra claimed that they were murdered. यहाँ पे इन्होंने ये सारी बकवास भी मारी थी उससे पहले कि दिशा कॉल्ड 100 एंड ना कोई सीडीआर है 100 की, ना कुछ है. I don't understand why would Devendra Fadnavis not support Rane? Heard he was bashing Rane today. Ashutosh ji, amazing point. Amazing point. अभिनव मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पॉइंट पे. मैंने पढ़ लिया है, मैंने पकड़ लिया है. एंड you're on the right track. हाँ, so सबसे पहली चीज, अब हो गई है बीजेपी में इंटरनल फाइट्स चालू. एक तो हमारा चल रहा है पार्टी वर्सेस पार्टी, एक चल रहा है विद इन कि भाई अगर बीजेपी जीतती है, जो कि अभी लग रहा है बहुत प्रोबेबल, जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके से ये वोट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, अगर बीजेपी जीतती है तो किसके हाथ में बड़ी कमान दी जाएगी, फडणवीस या राणे? तो अभी वो वाला वॉर भी चालू है.
ठीक है। पॉलिटिशियंस का काम है ये, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिशियंस का काम है। दे आर गोइंग टू कंफ्यूज अस ऑल इन अ वे वेर इन हम पागलों की तरह सोचते रह जाएंगे कि हुआ क्या। वो हमारा बना के प्यार से अपनी गद्दी पे बैठ के निकल जाएंगे। लेडी मिनिस्टर इन बीजेपी ऑब्वियसली, एक सेकेंड, सत्ता पहले बदलना चाहिए उनके लिए, ठीक है। अब एक चीज बड़ा बताते हैं, अभिनव राम का कमेंट था। अभिनव मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ ब्रो, बट बट तू बहुत सही हो सकता है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत ज्यादा सही हो सकता है। आई मीन बहुत 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 ज्यादा सही हो सकता है। जो तूने नाम यहाँ पे डाला है, कुड द यंग मिनिस्टर ऑल्सो बी सरनायक। मैं पहले भी बहुत तरीकों से हिंट्स दे चुका हूँ। विहांग ग्रुप सर्च करो, ढूंढो, बहुत कुछ मिलेगा। ईडी से रिलेटेड भी, एंड मे बी घूमते फिरते कहीं दिशा से रिलेटेड भी मिल जाए, हु नोस। ठीक है, तो ये तो रही जी हमारे। अब चलते हैं एक और आर्टिकल डेक्कन हेरल्ड का, and let's see what it has to say. It might mostly have the same information that we have discussed as what is Narayan Rane doing right now. बरसाती मेंढक जागे हैं। हेमा खुराना, देवेंद्र फडणवीस डन डे आफ्टर टुमारो। टुमारो आफ्टर प्रोटेस्ट आई एम थिंकिंग I'll be doing a session after protest as well at night, and that would be one of the best that you would like, that people have been demanding for. That's Ankita Lokhande. So be ready. कल उसको डिफेंड करने वाले भी आ सकते हैं, but कल अंकिता लोखंडे is not going to be spared is what I'll say, and I promise you she'll not be spared. Neha Bhatia, is Sarnaik missing? No, Sarnaik is not missing. Let me share another article. There we go. Hmm. Ad दे दो बस मुझे। Tisha Salyan, Sushant Singh Rajput were murdered. Okay, we know what did he say. ठीक है, I'm saying it again. Disha Salyan was raped and murdered on June 8th. When Sushant Singh Rajput came to know about it, the actor said, I'm not going to leave them. But they came on June 13th night and strangulated Sushant Singh Rajput. अब ये इन्हें कैसे पता चला कि एक्टर ने बोला कि आई एम नॉट गोइंग टू लीव देम? किसने बताया इन्हें? संदीप सिंह ने बताया या गणेश शिवारकर ने बताया? किसने बताया ये? Rane pointed out that the post-mortem report of Disha Salyan was not in the public domain, but he was aware of the details. When the government changes, these staff and doctors will speak out, he said, adding that many parts of CCTV footage, whiz a whiz, the two incidents are missing. Where is fiance of Disha Salyan, Rohan Rai? He asked. Rohan Rai is doing his projects. Don't you see, you fool? Okay. और सबसे बड़ी चीज, when the government changes, आपको ये क्लॉज लगाने की जरूरत क्यों है? भाई तो पहले चेंज लाके दिखा इस चीज में, पहले तो दिखा कि तेरे पास सच में कुछ है इस केस से रिलेटेड। उसके बाद हम गवर्नमेंट तुमको चेंज देते हैं ना। यू ब्रिंग द चेंज इन दिस केस, टर्न इट टू 302। ट्रस्ट मी, मैं कह रहा हूं, मैंने लाइफ में आज तक एक भी बार वोट नहीं दिया भाई। मैं महाराष्ट्र का अपना रहने का बनवा लूंगा, कोशिश करूंगा वोटर आईडी कार्ड बन जाए, अगले इलेक्शन में तेरे को वोट जरूर दूंगा। बट क्यों? आपको पहले चेंज क्यों चाहिए सरकार में? क्योंकि जब सरकार हमारी हो जाएगी उसके बाद है, हु गिव्स अ शिट, हु सुशांत सिंह राजपूत। दीपेश सावंत का नाम लिया उन्होंने, चलो सही बात। हम अलाउ करते हैं ऐसे लोगों को आके हमारा मजाक बनाने में, और उसके बाद भी हम ये कह रहे हैं कि नहीं यार, even if it, he's a union minister, even if he is taking Sushant Singh Rajput's and Disha's name for his own motives, we should let him, because किसी ना किसी तरीके से तो सुशांत का नाम आ रहा है। अरे बॉस, आपको पता नहीं है ये किस तरीके से कैसा केस, you have no clue what they can do.
They can easily try to make an image कि Sushant and Disha had an affair and that's why they both ended up taking their lives. आप मत दो इन सब चीजों को हवा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स कि वो किस तरीके से वो इस केस को दबा सकते हैं या हटा सकते हैं या क्या क्या नहीं कर सकते हैं, बिकॉज they have that influence, they have that power, and once they will have the government, they would have everything to do with the case. I'm not saying that, like we should bash Rane or we should go against them. If they have something, let's question him. If you have something, come out with it. You guarantee us 302, obviously by showing factuals and evidences, and we guarantee you votes. तो बट नो, उन्होंने बस नाम ले लिया जहां पे सुशांत और दिशा का, एज यूजुअल ये एक पैटर्न है। मैं आप लोगों को फिर जगा दूं और थोड़ा सा मिरर दिखा दूं, बुरा मत मानना प्लीज, कड़वा बोलता हूं, लग जाती है बातें, आई एम सो सॉरी इन एडवांस। बट हम क्या करते हैं फिर से, अरे तुमने देखा अर्नब गोस्वामी ने 2 मिनट के लिए सुशांत पे बोला, और हम 2 हफ्ते तक उस चीज पे खुश रहते हैं कि वी आर सेटिस्फाइड जस्ट बाय अर्नब गोस्वामी स्पीकिंग अबाउट सुशांत फॉर 2 मिनट्स। The same we are doing here. We are allowing them to give that spotlight, to have that spotlight that they so badly need. They want votes. And what better than a campaign wherein thousands and lakhs are connected emotionally? They are just channelizing our emotions into their own benefactor. Don't let them do it. That's my request. आपको जिस नेता को वोट देना है आप वो करो, बट किसी नेता को, बहुत अच्छी चीज है कि आप किसी यूट्यूबर को या किसी इंडिविजुअल को ये सब नहीं करने देते हो। तो माय क्वेश्चन इज, व्हाई टू डू इट फॉर अ नेता? एंड दिस गाय इज नॉट डूइंग दिस नाउ। Arnab did his part, I agree. Savvy, I agree, and I'm not against that. He did great. But I'm just giving you a very small example कि अगर 2-3 मिनट के लिए कोई कुछ बोल देता है, कोई एक बड़ा फिगर, हम ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे 302 लग गया है या फिर फांसी की डेट आ गई है। ऐसा क्यों खुश हो रहे हैं हम? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और वो सिर्फ सुशांत और दिशा का नाम अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए ले रहे हैं। उससे अच्छे तो आप हैं जो आप ट्वीट कर रहे हैं एक साफ मन के साथ, बिना किसी एजेंडा के। तो फिर चलो आगे बढ़ें, एक और आर्टिकल पे चलते हैं। जब इन्होंने 2021 से पहले 2020 में भी ऐसी उल्टी करी थी, मेंढकों का काम आता है। 2020 वाली बारिश में भी आए थे ये भी बारिश का मौसम है, देखना। नहीं, अक्टूबर, चलो लेट हो गया थोड़ा, मतलब बारिश से ठंडी में बदल रहा था, ऑटम फॉल चल रहा था, फॉल। तो मेंढक थोड़े घूम रहे होते क्योंकि पानी जमा रहता है ना तब भी कई जगहों पे। हाँ, हेडलाइन कहती है, बीजेपी राज्यसभा एमपी नारायण राणे brings up Sushant Singh Rajput issue again. The All India Institute of Medical Sciences report may have ruled out any homicide angle in actor Sushant Singh Rajput death, but BJP leaders continue to maintain that it was a case of murder. On Monday, BJP Rajya Sabha MP Narayan Rane maintained that the actor was killed and that the Uddhav Thackeray government had allegedly tried to hush up the case. Soon the truth would be known. ये 2020 से चल रहा है, ठीक है? ये ध्यान रखें पब्लिक कि soon the truth would be known. इनका soon साला आ नहीं पा रहा है. Pardon my French for using that word साला, but it's just the frustration that's coming out कि इनका soon आ नहीं पा रहा है. Whether it was death or suicide, who were involved in his death, how was he killed? The CBI has found substance in the case and hence taken up the case. It has not closed the case, said Rane. He also alleged that the actor's former manager, Disha Salyan, was also killed and the two deaths were linked. Now, he says, when reminded that the AIMS report had said it was suicide, he retorted, I have not read the report yet. How can I accept that report if I have not read it?
Obviously, Ames has also taken a U-turn. We very well know it. And this guy is on this case using it left, right, and center since 2020. Since 2020. And I'm not saying I'm not against any party. I'm not biased towards any party. I just feel that all these politicians, who are there for their agenda, who have lived 60-65% of their lives, I have a very different approach towards how the politics should be. I want young leaders. I want the youth to lead the country. And India, a country like India should learn from a country like Finland, a country like Canada, a country like others. I mean, I'm not talking about specific country, but the countries who are following this new idea of having youth as their leading powers. So, because एक ही घिसी पिटी पुरानी सोच is something which India is being run on a perception. But हमारा यूथ आज की डेट में अलग लेवल पे सोचता है. अगर वो अलग लेवल एक कंट्री के बेटरमेंट के लिए लगाई जाए, you have no idea how can it excel, right? So that's why. तो रानेज और इनका बैड बिहेवियर और इनके पॉलिटिकल एम्बिशंस, एंड the biggest thing is कि these people is the first family who's known as the first family of controversies within Maharashtra. The irony. Let me take you to one of the articles. Hmm. Okay. इससे पहले हम आगे बढ़े, संजय राउत ने भी संजय राउत के ऊपर इन्होंने काफ़ी कुछ बोला है कि संजय राउत ने शिवसेना को डैमेज कर दिया, एंड देन संजय राउत रिवर्टेड स्टेटिंग दैट वी आर योर बाप एंड सेंट बीएमसी नोटिस टू रानेज. वेट, लेट मी शो यू दिस आर्टिकल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. एक सेकेंड. There we go. हाँ, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म नहीं, मैंने तो ये नहीं खोला था. वेट अ मिनट, कहाँ गया वो आर्टिकल? Okay, it's for some reason it's not giving me the article though. Okay, so it's an article wherein Sanjay Raut had mentioned that we are your BAP, and he also mentioned that these people, they are putting on allegations without any proofs. That includes the Disha Salyan and Sushant Singh Rajput case. So let me take you all through a midday article wherein this Sanjay Raut, the Mamaji, has said something. एक second. Hmm. There you go. Okay. Sanjay Raut leveling allegations without proof. बीजेपी लीडर नारायण राणे. I'm sorry, ये नारायण राणे ने बोला है कि संजय राउत ने जो allegations लगाए हैं वो level किए हैं without any proofs. Let's read what he said. This particular article came on February 16th, 2022. So not long ago. Okay. The Sena Rajya Sabha MP had launched a personal attack against Somaya, against Kirit Somaya, okay, who has been raising a slew of allegations against the Sena brass and other leaders of the ruling Mahavikas Aghadi. Union Minister on Wednesday hit at, यार ये read more क्यों नहीं दे? अच्छा, what? हाँ. Okay. Union Minister Narayan Rane on Wednesday hit out at Shiv Sena MP Sanjay Raut, saying the latter is unleveling corruption allegations against BJP leaders without producing any documentary proofs. Speaking to reporters here, Rane, a BJP leader, said Raut is eyeing the post of Shiv Sena president, currently held by Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray, and trying to portray himself as a hardcore member of the state's ruling party. इनको भी मालूम है कि बेबी ठाकरे से तो कुछ होने वाला है नहीं, है ना?
वो पेंगुइन बैठ के बस रोएगा. दे संजय राउत की नज़र हो ना हो, आई डोंट गिव अ I mean, I don't think he is a material who could run a political party. Just like Uddhav Thackeray is not a leader material, just like Aditya Thackeray, followed by any and every whom you see in the MBA government these days. They are a bunch of college kids. You know, one does press conference, the other puts out a tweet, the other does a video, the other talks about someone else, and they are just slinging mud. कुछ टाइम पहले याद है यूट्यूबर्स की फाइट हो रही थी, मड स्लिंग इधर से उधर से. सेम चीज है, सेम एग्जैक्ट शिट, just a little bit of up the ante. It's like bigger masses, big masses are seeing. It's the same mudslinging shit which is happening right now between like Shiv Sena and BJP. And who's being used? बीच का बंदर कौन बन रहा है? सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सलियान का केस, वो हमें देखना है. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं अगले उस पे. वेट. हम्म आओ जी, हम थोड़ा सा पढ़ें राणे फैमिली के बारे में, एक एक करके कि राणे फैमिली की क्या हिस्ट्री रही है. ठीक है, व्हाट हैज ही बिन, व्हाट आर दीज पीपल बिन अप टू. हाउस ऑफ कार्ड्स, मैंने आज इस पे वो दिया था टाइटल. House of Cards, I don't know how many have you seen, how many of you have seen, but it's a series on basically how a cruel couple, treads the dangerous waters and, play people in their lives to achieve their political ambition, no matter even if it's playing on someone's death. So that's what Maharashtra is doing right now. Okay. Now, दीज हम जो इतना ये राने 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 राधे राधे नहीं, राने 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 कर रहे हैं. ठीक है, क्या फायदा है इसका? आपको पता है ये कौन लोग हैं? आपको पता है कि इनकी हिस्ट्री क्या रही है? आओ, एक छोटे से नुमाइने की पेशकश आपके सामने करी जाए. नीलेश राणे नाम तो सुना ही होगा. हाँ, ये है जी 20 मई 2016, हाफ पोस्ट का आर्टिकल है. नीलेश राणे अरेस्टेड फॉर असॉल्ट ऑन पार्टी वर्कर. ठीक है, former Congress MP Nilesh Rane was on Friday arrested by Chiplun police in connection with the case of alleged assault and kidnapping filed by a party worker, police said. Kidnapping, huh? Not just assault, kidnapping. Nilesh, son of former Maharashtra Chief Minister Narayan Rane, surrendered before the Chiplun police in Ratnagiri district at around 8 a.m. today, following which he was taken into custody. Rane will be produced before a court in Chiplun later on Friday. His supporters gathered outside the police station when he surrendered. However, there was no law and order issue, they said. The Bombay High Court had on Tuesday refused to grant pre-arrest bail to Rane and asked him to surrender before police on or before May 23rd. The police had told the High Court that there were serious allegations against Rane and his custodial interrogation was needed as investigations were still on. A case was earlier registered by Thane police against ठीक है, यहाँ थाने पुलिस आ गया फिर से, सॉरी थाने बॉयज, अगेंस्ट राणे. His personal assistant Tushar Panchal and bodyguard Manish Singh under relevant IPC sections for allegedly kidnapping and assaulting Congress president of Chiplun Taluka, Sandeep Sawant, in April. So Nilesh Rane kind of kidnapped and assaulted Sandeep Sawant 2016, 15-16. तो अब बताओ, क्या आप ऐसे लोगों को अभी भी अलाउ करने दोगे सुशांत का नाम यूज करना, हु आर ऑलरेडी इनटू किडनैपिंग्स एंड असॉल्ट? चलो एक केस है, किसी के ऊपर भी बन जाता है, और वो भी पार्टी वर्कर है, यू नो कर दिया होगा, किसी ने झूठा इल्जाम लगा दिया होगा. एक ही तो केस है. नहीं, एक ही तो केस है. However, आओ
एक और चीज देखें। आओ, ये वाला इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग, लेट मी शेयर दिस। इतने सारे एड्स, बंद करो यार, बंद करो भाई, बंद करो। ओके, आगे नहीं बोलूंगा। चलो। Former Congress Minister Narayan Rane's son detained. Okay. Bandra East bipole candidate and former Congress minister. Former Congress minister Narayan Rane's son Nilesh Rane was detained by the Kherwadi police on Saturday morning for violation of Model Code of Conduct. Police officials said Nilesh, a Congress party worker, was neither a candidate nor a voter in the constituency and was still spotted making rounds of the area. ये है जी 2015 की घटना। ठीक है। Besides Nilesh, the Kherwadi police also briefly detained Shiv Sena leader Vinayak Raut after he visited a shakha at Bandra East. Raut too is neither a candidate nor a voter from the constituency. Raut was handed over to the Bandra Kurla complex police as the area where he was found falls in the latter's jurisdiction. He is likely to be released later in the day. Meanwhile, Rane's other son, Nitish, was detained by the Wakola police for the same reason, but after questioning him and examining his vehicle, the cops let Nitish go. तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सामने है कि how this guy, how these people, Ranes, they have also played with votes and got arrested for this. They have played with votes. It's a crime, obviously. Tweaking with the voting machines and things like those. So they have been booked for that as well in the year 2015. ये ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन के लिए इतना गिर सकते हैं, और वही चीज अब ये एक सुशांत का नाम यूज करके एक अलग तरीके से कर रहे हैं। तो डिसीजन हमारा है कि हम इनको अलाउ करें या फिर हम यही बोलें कि अरे कोई नहीं, सुशांत और दिशा का नाम कम से कम नेशनल मीडिया में तो आ रहा है। हम में हिम्मत नहीं है क्या, हम में दम नहीं है क्या इनका नाम आगे ज्यादा बढ़ाने की? हमें इन पे डिपेंड होना पड़ेगा? दैट्स माय क्वेश्चन टू यू ऑल। ओके। काफी चीजें लिखा है यहाँ पे। Soon after Nilesh was picked up, and enraged Narayan Rane lodged a protest against his wrongful detention and warned not to let in any vehicles of the Sena into area till 5 p.m. when the voting ends. If I find any Sena leader or minister moving in their vehicles in this area illegally campaigning for their party candidates, I myself will stop those vehicles and ensure that police initiate action against them, is what Narayan Rane himself said. Now, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है। According to the latest report, Waris Pathan of the AMM party too was detained by the Nirmal Nagar police. Acha, theek hai. It is about how these people were misusing the poll booths to ensure that the result turns out to be in there. We had Shiv Sena there, we had AMM party there, we had BJP there. Devender Singh is saying, be realistic, SSRians don't have the pull, unfortunately. Devender ji, agar SSRians don't have the pull already, does that mean that we give Sushant's and Disha's name on a silver platter to these mendags and ask them कि okay, लो, आप अपना political agenda पूरा करो और exploit करके चलते बनो, जैसे सबने किया? So rather than doing all hail King Frog, let's take things in our own hands. That's all I'm trying to say. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं। लेट्स सी। अब इनका सिर्फ इन्हीं सिर्फ वायलेंस, किडनैपिंग, वोट में हुलिगनिज्म सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये एक नंबर के जातिवाद इंसान है। और मैं अगर कह रहा हूं इतनी बड़ी चीज, यस, नीतीश राणे एक नंबर के जातिवाद इंसान है, और मैं आपको दिखाता हूं। ऐसे लोगों को हम मुंबई का इलेक्शन जितवाएंगे। वेट,
अरे बंद हो भाई. Okay. Congress MLA says Mumbai streets should be cleaned of Gujaratis. Seriously? And that too November 6th, 2014. ऐसी तो मेंटालिटी है इनकी. It seems young Congress leaders are towing the Shiv Sena line and indulged in divisive politics to woo Marathis after the party's rout in the assembly elections. While Congress MLA Nitesh Rane has kicked up a storm by saying he wants to kick off the Clean India campaign envisioned by PM Narendra Modi from Mumbai by cleaning the city of all Gujaratis, party legislator Pranti Shinde took on the aiming by seeking a ban on such behavior. Nitish Rane is a senior Congress leader, Narayan Rane's son, and Praniti Shinde is veteran party leader and former Union Home Minister Sushil Kumar Shinde's daughter. Want to take part in Swachh Bharat Abhiyan and start from Mumbai? Want to start cleaning up all the Marathi hating good Jews from there once for all? Nitish Rane tweeted. Jatiwad. Reacting to the Congress leader's comment, the BJP's Maharashtra unit treasurer Shaina NC said Nitish is a symbol of abusive politics. पढ़िए, आप ही की फेवरेट पार्टी आप ही की फेवरेट पार्टी बीजेपी ने बोला है ये कि नीतीश is a symbol of abusive politics. I feel Sushant and Disha's name is being abused by this person. Why are you guys not enraged? I don't get it. A person who is talking about moving a particular caste out of a city, moving an entire caste out of the city, just because he thinks that Gujaratis are coming and taking the opportunities out of Mumbai. Are you that self incompetent? बट नहीं, नेशनल मीडिया में सुशांत और दिशा का नाम आना आ रहा है. करने दो, करने दो, एंजॉय करने दो. क्योंकि बॉस, सच ये है, अगर ये जीत भी जाते हैं ना, अगर ये बीजेपी जीत भी जाती है, मैं लिख के दे रहा हूं, ये बोलेंगे कौन दिशा कौन सुशांत. आजमा के देख लो, इज ऑल आई वुड से. आगे बढ़ो, एक और चीज दिखाते हैं, चलो. कितनी बार पकड़े गए हैं ये बाप बेटे सारे. एक और. एक और, चलो 2013 पे चलते हैं. 15-16 हो गया, 14 हो गया. अब देवेंद्र जी अभी भी मान नहीं रहे हैं. बट आपकी बात सही है, आपकी बात सही है कि नाम आ रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है सुशांत और दिशा के नाम को. इट्स कम्प्लीटली फाइन. बट हम किन्हीं भी अंधों के नाम पे नहीं दे सकते. ऐसे तो एक्सपोजर फिर वो लोग भी दे रहे थे ना सुशांत को, जो कह रहे थे कि सुशांत जिंदा है. राइट. ओके. हेमा खुराना जी कह रही हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन. Should we not let them be if they are talking pro SSR? See, pro SSR बोल के आज 4 लोग आएंगे, बोलेंगे प्रो SSR. आप यहाँ पे ये भूल रहे हो कि आप सारी की सारी पावर, अगर हम इनका सपोर्ट में उतर गए, अगर हमने इनको ऑल हेल कर दिया या राजा बना दिया या कुछ कर दिया, वोट पॉलिटिक्स ये जीत गए, हजारों की लाखों की. ठीक है, वोट मिले, ये जीते, इन्होंने शपथ ली. सब भूल जाने वाले हैं इस केस के बारे में. हमें ये समझना है, क्योंकि सच्चाई वो है. दैट इज हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स. ऐसे तो फिर हमें और भी लोगों को, लाइफ थ्योरी वालों को भी रोकना नहीं चाहिए ना. उन्हें भी बोलना चाहिए ठीक है, कम से कम वो सुशांत और दिशा का नाम तो ले रहे. तो फिर तो आप वही वाली बात हो गई. वो आप उनको भी वैसे, ये रानीज भी वही लोग हैं जो अपना फंडा क्लियर करने के लिए आ रहे हैं. हमें ये समझना है. अभी रुको ना, आगे पढ़ो ना, आपको दिखेगा क्या है और क्यों है. ये है 2013 का फ्रेश. मतलब 2015 पढ़ा हमने, 16 पढ़ा हमने, अब 13. Narayan Rane's son held for assaulting toll booth workers in Goa. December 3, 2013. फिर से नीलेश राणे. नितिश राणे. माय बैड.
हाँ, देखो शक्ल तो देखो कैसे स्माइल कर रहा है। ओके चलो आगे बढ़े। नीतीश राणे, Swahiman Sangtana leader and son of Union Minister Narayan Rane, was held in Goa today for allegedly assaulting toll booth workers at a toll plaza. Nitish also impersonated his elder brother Nilesh Rane, who, like their father, is a Congress MP. He impersonated Nilesh Rane. भाई ये तो इंसेप्शन खेल रहा है. The incident occurred when he was traveling from Mumbai to Goa when his car was stopped at a toll booth and Nitish was asked to pay. भैया टोल पे करने के लिए बोला था, टोल वाले को धर दिए. Nitish has been taken into custody and an FIR has been filed against him, reported CNN IBN. He was also recently embroiled in another controversy when he slammed Lata Mangeshkar a few weeks ago for endorsing Narendra Modi for Prime Minister. और ये हैं हमारे बीजेपी के चहेते हैं. चलो एक और आर्टिकल पे चलते हैं. और इनकी एमवीए से जो दुश्मनी है ना, इनकी जो एमवीए से दुश्मनी है वो इतनी पुरानी है. लेट मी शो यू. ठीक है. ओके. ये देखो, ये है कॉलेज स्टूडेंट. अभी दिखाता हूँ रुको. लिटरली कॉलेज स्टूडेंट. आदित्य ठाकरे, नीलेश राणे क्रॉस स्वर्ड्स ओवर ओवरटेकिंग इशू. अभी पढ़ना है सही से. मुंबई सितंबर 15 2011. 2011 आज से 10 साल पहले. कॉलेज किड्स. A convoy of cars belonging to Congress leader Narayan Rane's son Nilesh zipped past the convoy of Aditya Thackeray, son of Shiv Sena, executive president Uddhav Thackeray in Worli on Wednesday, causing a convoy. Okay, हाँ यहाँ पे लिखा है. Causing the two Skyans to cross swords at the police station. Aditya Thackeray on Wednesday lodged a non-cognizable complaint against former party leader Narayan Rane's son Nitish, stating that Nitish's convoy had tried to zoom past his convoy while passing on the streets. मतलब कसम से भाई ने केस कर दिया जाके. आदित्य ठाकरे ने केस कर दिया. मेरे कॉन्वॉय को ओवरटेक करके चला गया. मैं नहीं खेल रहा मम्मी, मैं नहीं जा रहा, मेरे को केस करना है. ये इनके बीच में तब से चलता आ रहा है. हमें ये समझने की जरूरत है कि ये इनका पुराना आपसी की वो अनबन होती है. The trigger, said police sources, was that Nitish and his cavalcade of security personnel had on Wednesday evening zipped past Aditya's convoys near Worli Naka. Sources said that this led to a minor powwow between the security personnel of the two young men and Aditya Nitish. Later in the evening, a crowd of Shiv Sena supporters had assembled outside Worli police station demanding stringent action against the Ranes. नहीं ऐसे हो कैसे सकता है. उसने ओवरटेक कैसे कर लिया. ओवरटेक किया कैसे. फांसी दो, फांसी दो. हम नहीं जानते. फांसी दो नहीं तो मुंबई जला देंगे. ओवरटेक कर लिया उसने. शिवसेना को आप वोट दे नहीं सकते. बीजेपी के कारनामे आप देख ही रहे हो. कॉलेज स्टूडेंट्स. फडणवीस एक अपनी अलग धुन में चल रहा है. राउत के साथ मीटिंग करने के बाद से आज भी हमें याद है कि सुशांत का केस कैसे दबा था. किसको वोट दें. किसको. भाई बनो कोई केजरीवाल. जाओ भाई. मुंबई मुंबई को भी एक केजरीवाल की जरूरत है आई गेस. मतलब ओवरटेक कर दिया केस कर देंगे. नहीं आदित्य भाव ऐसे बेबी भाव के ऐसे कर दिए. कैसे ओवरटेक किया. केस होगा. आओ एक और जगह चले. हिस्ट्री में चले. थोड़ा थोड़ा पढ़े जाने समझे. ओके. और इन ये जो अक्यूज करते रहते हैं ना. अब मैं ये नहीं कह रहा. अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसने अगर ठाकरे को अक्यूज किया है तो गलत किया है. मे भी बहुत सही किया है. मे बी. बट एक पैटर्न है.
इन्होंने एक बार बाल ठाकरे को भी अक्यूज किया था ऐसे ही। ये देखो, अब मुझे नहीं पता वो कितना सच था कितना नहीं, बट मैं इनका पैटर्न दिखा रहा हूँ। 16 जनवरी 2019, ज्यादा पुराना नहीं है। उन्होंने कहा, former MP Nilesh Rane accused late Bal Thackeray of attempting to kill Bollywood singer Sonu Nigam. According to Nilesh, son of former Maharashtra Chief Minister and former Shiv Sena leader Narayan Rane, the founder of Shiv Sena, had made several attempts to kill the popular singer on several occasions. Former MP Nilesh Rane on Tuesday accused late Bala Sahib Thackeray of attempting to kill popular Bollywood singer Sonu Nigam. Commenting on the same, revealed that Sonu Nigam was also aware of this. Nilesh said that the orders of Bala Sahib Shiv Sainiks had tried to kill Nigam. The MP said, "Don't force me to tell you about the relationship between Thackeray family and Sonu Nigam." Nilesh also threatened to further spill the bills by saying, "How many people died at Bala Sahib's Karjat farmhouse? Don't compel us to open our mouths." He even accused Thackeray of murder of Shiv Sena leader Angad Dighe in 2001. He claimed that two Shiv Sena workers who were aware of Dighe's murder were also killed. एक तो मेरे को समझ नहीं आती, ये है जनवरी 16, 2019। ये रानेस के पास हमेशा इंफॉर्मेशन कैसे आती है, जैसे ये सोनू निगम वाली इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे भी ये सेम तरीके से कह रहे हैं कि हाँ हमें ये पता है, ये हुआ है, इसको मारा है। करजत फार्म हाउस का फिर से वहां पे नाम लिया कि करजत फार्म हाउस में कितने लोगों को मारा है। इनके पास कैसे इंफॉर्मेशन आ जाती है? कौन है, क्या है इन लोग? इनका खुद का रॉ चल रहा है क्या? और अगर इंफॉर्मेशन आती है तो ये देते क्यों नहीं है? और देते हैं तो सामने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते? कभी आप कहते हो कि हमने सीबीआई को इन्फॉर्मेशन दे दी, कभी आप कहते हो कि नहीं सीबीआई हमसे मांगेगी तब हम देंगे। आप इतने स्पेशल हो, कोई ठाठ बैठे हो कि सीबीआई आएगी कि राणे साहिब वो आपके पास है तो वो दीजिए ना जरा, आप वो ही देते रह जाएंगे। एक और चीज, चलो चलो लेट अस check this article which explains more to us about the Ranes. Narayan Rane, the controversy king, who made it to PM Modi's cabinet from a street gang in Mumbai. ये हैं तुम्हारे प्रहार वाले। अगर आप शिवसेना के पास सामना है तो इनके पास प्रहार है। प्रहार इनके न्यूज़पेपर का नाम है, बाय द वे। सामना वर्सेस प्रहार चलता रहता है हमेशा। Union Minister and BJP leader Narayan Rane was on Tuesday arrested after sparking off a row over his remarks about slapping Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray for what he claimed was the latter's ignorance of the year of India's independence. Rane was taken into custody by police in coastal Ratnagiri district, where he is traveling as part of the Jan Ashirwad Yatra, an official said. कब का है ये भी देख लें, कब का है ये? अगस्त 24, 2021। Former Maharashtra Chief Minister Narayan Rane was recently inducted into Prime Minister Narendra Modi's new cabinet as Minister for Micro, Small, and Medium Enterprises, strengthening the BJP's foothold in the Konkan region. Born in April, whatever, blah, 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 blah. Before entering politics, Rane was a member of Haryana Gang. ठीक है, यहाँ भी हरिया है, देखो हरा होता ना मेंढक। Haryana Gang, a street gang operating in Mumbai's northeastern suburb of Chembur in the 1960s. Oh, Chembur ka, he's a hustler, man. He was a gang member. He used to hustle. Okay. Rane's initiation into politics took place as a member of Shiv Sena when he became a local Shakha Pramukh at Chembur, Mumbai, inducted into Sena by Bala Sahib Thackeray, who was also his mentor. Rane became a corporator in Bombay, then chairman of Bombay Electric Supply and Transport, which then had a budget of over 1,500 crore. कितने जेब में डाले हैं ना इस महाशय ने, who knows. His handling of finances and raising money for the fledgling Sena brought him closer to Supremo Bala Sahib Thackeray.
Appointed chief minister by Balasaheb Thackeray when CM Manohar Joshi was asked to step down from the post in 1998. Rane remained on the seat for 8 months before the Sena BJP lost in the subsequent elections. With the emergence of Uddhav Thackeray, Rane was sidelined, which led to him heavily criticizing the former's working style. So it became a hypocrisy king. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है. केसेस अगेंस्ट नारायण राणे. आओ पहले हम जाने कि इनके खुद के अगेंस्ट क्या क्या केसेस आए यहाँ पे. At the time, Rane decided to join the National Democratic Alliance NDA. He was facing allegations of money laundering by BJP MP Kirit Somaiya, who had accused Rane of diversion from money laundering. He was also part of a state government probe into irregularities in denotification of industrial land in Nashik by the Industries Department. Earlier in 2002, former Congress legislator Padmakar Walvi had filed a case against Rane, who was then with the Shiv Sena and BJP's Gopinath Munde, among others, alleging forcible abduction ahead of a trust vote against then Congress NCP government. The police filed a charge sheet against Rane and other accused who were later granted bail. So, ओ बेटों का भी है. बेटों का भी है. एक सेकंड बस ये पढ़ ले, इसके बाद दूसरे आर्टिकल पे जाएंगे. ये तो बस हम राणे को समझ रहे हैं कि what are these people. Rane's son Nilesh, a former Congress MP, and Nitesh, a Congress MLA, have also been embroiled in several controversies. In 2015, Swiss leaks listed Nilesh and Narayan Rane's wife Neelam as account holders. If you guys remember Swiss leaks, then yes, their wives are part of that holders. Attending a rally he had convened as part of the Maratha protests in the state. In 2017, Rane's younger son Nitish was arrested for using force against a public servant and criminal intimidation, among other charges. Earlier that year, the Mumbai police registered a case against him based on the complaint of a restaurant owner in Mumbai's Juhu for allegedly extorting money. किधर हो भाई एक्सटॉर्शन वालों? कल किधर हो एनआईए? कहाँ हो सीबीआई? The Goa police had charge sheeted Nitish in a 2013 case of allegedly vandalizing a toll booth in North Goa. We did read about the toll booth wala thing. In 2010, Nitish was charged with attempt to murder after Shamim Sheikh, who was the vice president of the transport wing of Nitish's Swabhiman Sanghatana, alleged that latter had fired at him in the Swabhiman office at Khar. ऑफिस के अंदर ही गोली चला दी है. मतलब फुल ऑन नायक वाला सीन. अपना ही है मुंबई देखा जाएगा. अपना ही है मुंबई देखा जाएगा. So why Ranis? Why should the people of India trust you just because you're saying that if they come into power, then Sushant and Disha case would be talked about? Why is there a condition of if? Why don't you show us what you have got? Why don't you just walk up to CBI and give them whatever it is? And then we talk about you winning the elections. Otherwise, sorry, boss, you hold no importance at all. एक और पढ़ते हैं. ये बहुत अमेजिंग है. ये आपको नीतीश राणे का जातिवाद होना ही नहीं बट घिनौना होना भी दिखाएगा कि कैसे हैं ये इंसान. महाराष्ट्र कांग्रेस एमएलए नीतीश राणे booked under non-bailable sections for throwing mud on engineer. Throwing mud मतलब mud slinging नहीं. Actually, आओ पढ़े. Former Chief Minister Narayan Rane's son and Congress MLA Nitish Rane, along with his many supporters, booked for misbehaving with a government engineer. Maharashtra police have registered an FIR against Nitish Rane and his 40 to 50 supporters under Indian Penal Code sections this.
Congress MLA Nitish Rane's shocking video had gone viral, which shows the legislator and his supporters throwing mud on a government engineer at Gadnadi Bridge near the Mumbai Goa highway in Kankavli. Reportedly happened when they were inspecting potholes on the highway. Errant Congress MLA was seen misbehaving and using force against government servant, and later legislator and his supporters tied him up to the bridge over a river. Seriously? Nitish is heard saying in the viral video, throw it on him, throw it on his head. Now you will understand what should people do. Should they die in front of you? What will happen if the wall collapses? Even though his controversial video went viral and his misbehavior was criticized, Nitish Rane was not shaken and heard making controversial statements. क्या आप अभी भी ट्रस्ट करेंगे इन पे? बांध दिए, बांध दिए ब्रिज के कोने में और मिट्टी मार रहे इंजीनियर को. सीरियसली? और ये लोग सुशांत और दिशा के जस्टिस की बात कर रहे हैं और हम इन्हें एंटरटेन करें, हम इन्हें प्रेज करें. क्यों? जस्ट बिकॉज नेशनल मीडिया तक लेके जा रहे हैं. संदीप सावंत, ओ ये वाली तो संदीप सावंत वाली तो हमने इन्फॉर्मेशन देख ली है. बट दैट असॉल्ट वाज रियली ह्यूज. संदीप सावंत वाली, ही वाज वेरी बैडली इंजर्ड. ठीक है, रुको, और है कुछ, कुछ कुछ तो है. और मैं ये बहुत कम चीज़ें निकाला हूँ, ये बहुत कम चीज़ें हैं. देयर आर अ लॉट दैट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट, बट द थिंग इज दैट मैं बस एक पैटर्न दिखाना चाह रहा था कि how these people have been misusing the law and power since years, and how we should not so easily trust these people. क्योंकि पॉलिटिक्स के हाथ में सारी चीज़ें हैं, बी इट स्टेट और बी इट एनीवेयर एल्स. ठीक है. Outrage over police inaction in Nilesh Rane controversy. I message the CM on stern action against officer Khar police station and Nita Lobo. Oh, एक और चीज दिखाता हूँ. चलो, एक और दरिंदगी की दास्तान मिल गई है मुझे नीलेश राणे की. वेट, लेट मी शो यू. बॉटम लाइन पे आएंगे मुबीना. एक और चीज देख लो, उसके बाद बॉटम लाइन पे भी आएंगे. कंट्रोवर्सी. स्माइल देख रहे हो लड़के की? अरे गुरु. Civic activists in Bandra Khar are appalled at the behavior of the cops in the Anita Lobo case and are petitioning the chief minister on this. I messaged the CM on Monday afternoon to take a stern action against the officials at Khar police station and immediately review the scrutiny of VIPs, said Tushar Gandhi. Let me read what exactly it says. Nilesh, son of State Industries Minister Narayan Rane, had allegedly abused a traffic police warden, Anita Lobo, a lady, a girl, on January 18th. He even called up the cops and had her detained in the Khar police station for 3 hours. Faced with the barrage of criticism, Nilesh's younger brother of Nitesh met Anandini Thakur of Khar Residents Association and assured her that all their security staff would be oriented towards a better and courteous behavior towards residents. Shyam Kulkarni, trustee of voluntary organization Agni, working towards effective governance, said that Nilesh was a habitual offender and that she would be taking up the issue with the CM. About 2-3 years ago, Nilesh Rane had assaulted 2 constables on Carter Road. No action was taken back then either. Anita Lobo is my ex student. She is being paid by the neighboring schools to work at a busy traffic junction of CD Marg and 20th Road at Khar. Nobody, including Rane, is above the law. We will be taking up the issue and writing to the chief minister, she said. So Rane did physically abuse that particular girl, Anita Lobo, who was a traffic in charge.
Every time Nilesh's vehicle needs to be parked, his private guards clear up the spot up to a radius of 10 meters. He can afford these guards only because of taxpayers' money, yet his men rough up the very same people, she said, adding that she will take up the issue with the CP Satyapal Singh next week. What comes as a shock is the police's behavior, opined Vidya Vaid of Bandra Residents Association. The police could not protect a volunteer who is helping them out. How much do we pander to the politicians' egos? Exactly. So, just like that, Nilesh Rane abuses a lady traffic warden. Nothing is done. Nothing is done. So, दिस इज रानेज फॉर यू। और यहाँ पे जो एक पॉइंट है कि पुलिस इनके दम पे चलती है, इंक्लूडिंग द बैंड्रा पुलिस, इंक्लूडिंग द बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पुलिस, बीकेसी पुलिस। आई लाइक टू शो यू समथिंग। एक फोटो जो मैंने बीकेसी पुलिस स्टेशन में क्लिक करी थी कल, एंड आई वांट टू शेयर दैट विथ यू गाइस टू शो यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू। वेट। हम बोलते हैं ना कि पुलिस स्टेशन, इन पॉलिटिशियंस की जेब में कैसे है पुलिस वाले, यू नो कैसे हैं? आओ, वाइट, ब्लैक का पैसा वाइट में होते हुए देखें। आओ, वेट, वॉच दिस। ये है उस पुलिस स्टेशन में एक लगा हुआ बोर्ड जो पब्लिक किया गया है। ये वो पैसे हैं, ये वो नाम हैं उन कंपनीज के और ऑर्गेनाइजेशंस के, और उनके सामने वो अमाउंट है जो इन ऑर्गेनाइजेशंस ने पे किया है फॉर दिस पुलिस स्टेशन टू बी बिल्ट। It includes names like ICICI Bank, Citibank, Reliance Industries, 15 lakh, 25 lakh, 25 lakh, 25 lakh, MMRDA, Adani Realty, ठीक है, श्री संजय निरूपम हु इज एन एमपी, हमें मालूम है नहीं, 10 लाख संजय निरूपम जी ने दिए हैं, सुनील दत्त जी ने 10 लाख रुपए दिए। ये जितने भी कंपनीज हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, सहारा हॉस्पिटैलिटी है, तो ये तो सिर्फ एक पुलिस स्टेशन का लिस्ट है अबाउट द नेम ऑफ पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन बिल्डिंग दिस पुलिस स्टेशन। ऐसे कितने पुलिस स्टेशंस हैं और ऐसे कितने पुलिस स्टेशंस में ऐसे बोर्ड्स लगे होंगे। और इट इज सो इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड नाउ दैट पुलिस कैसे इनके कदमों पे चलती है। पुलिस सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, पुलिस हर पॉलिटिशियन की पॉकेट में है, ये याद रखना। सिर्फ शिवसेना की पॉकेट में नहीं है। पुलिस वाले हर पॉलिटिशियन के हैं, पुलिस वाले पैसों के हैं, जो पैसे देगा वो उसके हैं। सो इट इज वंस अगेन गाइज, मैं बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, ये जो बरसाती मेंढक आके अभी फुदक रहे हैं, इनका फुदकना बंद करवाओ। इनको एक ऐसे बाल्टी ऊपर रख देते हैं ना हम, किसी भी ऐसी चीज पे जिसको हम ज्यादा नहीं चाहते कि वो इधर उधर होए, इनको रखो साइड में। अगर इनको कुछ देना होगा, बाय ऑल मीन्स ये सीबीआई के पास जाएं, दे दें, उससे हमारी बहुत अच्छा हेल्प हो जाएगी। वो हेल्प होगी तो हम वोट देने के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज दे डोंट डिजर्व आवर अटेंशन, एंड वी शुड इनफैक्ट एनकरेज पीपल स्पेसिफिकली नॉट टू वोट फॉर दीज पीपल। अब चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, हमने तो ना कर दी, नहीं चाहिए पॉलिटिक्स। क्योंकि अगर पॉलिटिक्स ऐसी है तो बिल्कुल नहीं चाहिए। वैसे भी इंडिया का यूथ आज की डेट में 12th में हर बच्चे का सपना है कि वो भाई 12th क्लियर करने के बाद आईएल्ट्स देगा, बाहर जाएगा सीधा पढ़ाई करने।
That's how India is going to be. Gloria is saying, then who, Bharat? Gloria, a change. Nota, no vote, no confidence in any. And that's what I'd say. That is what they need to understand. That they are not the one who's running the show. We are the one who are running them. They are politicians because of us. They're politicians because of their intent and traits, but they are successful politicians because of us. Because everything comes down to the vote bank. And currently, the situation is such that when no one is talking about SSR, this this controversial family is, because they have an agenda, and at the same time Fadnavis is also taking an advantage and trying to take shot at Rane's. Sanjay Raut is doing it from there. And don't forget the meeting between Raut and Fadnavis. गेम चालू है बॉस. पार्टीज का आपस में गेम चालू है. प्लीज इन लोगों को इररेलेवेंट समझना स्टार्ट कर दो. हम सब बहुत सुख रहेंगे. और रही बात नेशनल मीडिया तो प्रॉमिस नहीं कर सकते यार, बट जितना भी कर पाएंगे करेंगे. भाई नहीं, सॉरी, हम पॉलिटिशियन नहीं है, ना हमें बनना है, ना हम बन सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर वो ट्रेट है ही नहीं. और सीरियसली, आई एम नॉट सोनू सूद. आई कांट बी अ पॉलिटिशियन. मेरे नाम का सिक्का नहीं चलता. ठीक है. बाकी हम अपनी तरफ से अवेयरनेस जारी रखें, कंसिस्टेंसी में रखें. और ये महाराष्ट्र और ये वी जस्ट रैटल दीज पीपल. दैट्स व्हाट वी नीड टू डू. जिसकी स्टार्ट हो चुकी है, हमें बस इसको कंटिन्यू करना है और कंसिस्टेंट रहना है. तो दिल्ली वालों, मिलते हैं कल. बट देन भारत, हाउ डू वी गेट जस्टिस फॉर SSR? Judy ji, being consistent in demanding a change, working towards it, executing a change, and taking the justice ourselves is what I believe in. I know it sounds unreal, unrealistic, not practical. Oh, time does wonders. You don't know. So, yeah, every effort counts. Let's build it on. Delhi people, be ready tomorrow. सुबह हम मिलते हैं कल. एंड उसके बाद नेक्स्ट वीक मुंबई में एक और गैदरिंग है. ठीक है, वो दिल्ली से आने के बाद बताएंगे, या कल रात वाले सेशन में बता दूंगा. ठीक है. थैंक यू सो मच एवरीवन. लेट्स, बिफोर आई लीव, यस जूडी जी, आई एम वेटिंग फॉर योर पॉइंट. तब तक आई टेक अदर कमेंट्स हियर क्विकली. वोट बॉयकॉट. एग्जैक्टली, वोट बॉयकॉट. वोट को बॉयकॉट कर दो, वोट ही नहीं देना. विल यू एक्सपोज मोदी जी? अरे मोदी जी, मित्रों, मोदी जी अगर कुछ गलत करेंगे, मैं कोई नहीं होता एक्सपोज करने वाला, बट मोदी जी अगर कुछ गलत करेंगे तो मैं उनके अगेंस्ट भी बोलूंगा. वो कोई, आई मीन यार, कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है. ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल आर पॉलिटिशियंस. पॉलिटिकल एजेंडाज, अरविंद केजरीवाल के भी हैं. पॉलिटिकल एजेंडाज अमित शाह के भी हैं, मोदी के भी होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी के भी थे, मनमोहन सिंह के भी थे, सोनिया गांधी के भी थे, जवाहरलाल नेहरू के भी रहे होंगे, महात्मा गांधी के भी रहे होंगे. क्योंकि ये सारे पॉलिटिशियंस हैं. आपको ये समझना है, ये सारे हीरोज नहीं है. ये सारे पॉलिटिशियंस हैं. इनका काम है पॉलिटिक्स. ठीक है. सो जो गलत करेगा, जो इस केस के साथ गलत करेगा, मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगा. भैया, देश का बीड़ा मैंने नहीं लिया, ना ही मेरी औकात कि मैं देश को सुधारना चलूं या फिर मैं कुछ कर पाऊं. छोटे छोटे स्टेप्स से ही चेंज बड़ा होता है. मैं इस केस के लिए एक चेंज लाने की कोशिश कर रहा हूं एज एन इंडिविजुअल, सो दैट एवरी इंडिविजुअल स्टार्ट टू थिंक कि हर एक इंडिविजुअल वॉइस, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, वो इनफ है. नेशनल मीडिया या मासेस नहीं. ठीक है. बस मैं वो फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ. और मैं अपने पर्सनल कैपेसिटी में मुझसे जितना होगा, आई विल बी एबल टू डू इट, एंड आई वुड डू इट. पॉलिटिक्स एंड ऑल,
I'm not here to change the world. I'm here to change the way people think about this case. That's my aim. Okay. Thank you, Judy ji. Okay. SRK went to Delhi and Aryan went free. If drugs was a cleanup agenda, then how come the man on the two seats saw this and wasn't it? Judy ji, a very good question. आपको पता है ना, अभी लता जी का जब हुआ था, कौन गया था पैर पड़ने? हमारे गुड़ चना वाला चाचा के पैर पड़ने क्यों गया? सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं गया? मुझे एक बात बता दो, सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं गया? और why did this guy हकला went to specifically touch feet of गुड़ चना चाचा? है ना, पता है ना हमको क्या चल रहा है? ओके, प्रियंका दी ने बोला था यस ऑल पॉलिटिशियंस ब्लड इन से। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट समझते हैं पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? राजनीति। राजनीति इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड which still holds such an importance in our lives that runs a country. ठीक है, पॉलिटिशियन एट द एंड ऑफ द डे राजनेता हैं सारे, सारे पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो मोदी आ जाए चाहे वो कोई भी आ जाए, इट्स अ पॉलिटिशियन एट द एंड ऑफ द डे। उसको पॉलिटिशियन बनने में मजा आ रहा है, उसको कंट्री चलाने में मजा आ रहा है इसलिए वो कर रहा है, या उसका सपना होगा, उसने देखा होगा कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ। बट पॉलिटिशियन बनने के लिए आपको ब्रूटल होना पड़ता है, आई गेस दैट इज हाउ पॉलिटिक्स इज प्लेड। तो रही बात, जब तक मैं हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, आई वुड नेवर फेवर पॉलिटिक्स, आई वुड नेवर अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स एंड आई वुड नेवर वांट टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, बिकॉज जिस गली जाना नहीं उसका पता क्यों पूछे नहीं, वही बात है। ठीक है, हु इज गुड़चना चाचा? ही इज शरद पवार। श्री 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 108 बार शरद पवार। ठीक है, तो प्लीज इन मेंढकों को एक्सक्यूज करें और इन्हें अपने रास्ते जाने दे, टर टर करने दे। अगर इन्हें कुछ देना होगा, नो वॉइस नो साउंड। ओके, अगर इन्हें कुछ देना होगा सीबीआई को ये देंगे, बट ऐसे ये बकबक नहीं करेंगे कि सीबीआई जब मुझसे आके मांगेगी तब दूंगा। क्यों भाई, तुम कोई प्रधानमंत्री नहीं हो, सबसे पहली चीज। सो प्लीज अपनी आंखें खोलें, सतर्क रहें, सावधान रहें और इन दुश्मनों से बचें। Let the facts do the talking. See you tomorrow at the protest and also with Ankita Lokhande's Kundali and Kahani tonight, tomorrow night. Let the facts do the talking. One life.